on open mic. So मैं भी अपना mic mute करता हूँ, and you please start the session. And thank you. And thank you so much for inviting. Okay, Assalamu alaikum everyone. I'm Ihsan. I'll give you a little introduction about myself later in the presentation, but today we are here to discuss about something very close to my heart, which is around experimentation. And it stems from being a curious person. So that's why I'm here to talk to you about this. I am currently head of experimentation at UNDP Pakistan. So, as the name suggests, it is a little funny as well. But let's see what I do. And before that, I want to make an inclusivity pledge. I don't know about the audience, everyone in the audience right now, but if anyone has hearing impairment या मेरी बात नहीं समझ आ रही या मैं तकबत करके बोल रहा हूँ, आपको issue हो रहा है, no, don't worry about that. Drop me an email, and I think this call is being recorded as well. So that will be shared. But in case you want us to do a script of this, we'll be happy to help and do that. Although I asked when we are in physically meeting, so I would ask how many are men, women versus other uh, traits which we can celebrate who's in the room. But right now, with celebrate, I also mean respecting each other's viewpoint, because when we'll be moving on to some interactive activities through the group chat or by unmuting ourselves and speaking, we will have to respect each other's viewpoint. शायद आपको लगे कि मैं बहुत अंग्रेज हूँ, मेरे पास प्रिविलेजेस ज़्यादा हैं तो मैं ये बात कह सकता हूँ. शायद आपको लगे, मुझे लगे, या मैं ये अजम्पशन करूँ कि किसी के पास प्रिविलेज ज़्यादा है तो वो उसके पास रूम फॉर क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, या ये एक्सपेरिमेंट हमारी एजेंसी में तो नहीं चल सकता कि यहाँ का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है, या ये बड़े शहरों की बातें हैं. Whatever it is, we have to maintain a degree of respect towards how we think and also towards others who made an effort to be in this call by respecting our boundaries, our thinking boundaries. हम बहुत भी सोच सकते हैं, हम बहुत कम भी सोच सकते हैं. So we have to keep a balance in how we think as well. So I just wanted to iterate this. Okay, it's important to respect each other wherever you can and should always. So who am I? So as I told you, I work in UNDP Pakistan. I look at the experimentation portfolio of the lab, which was recently created. It's called Innovation Accelerator Lab by UNDP Pakistan. Before this, one of the participants is in the call as well, and I think she is from Helvetus, Huma, who helps with all the programming of this internship program as well, was with me on a fellowship in the US before this. And I'm an environmental sciences graduate with a master's in innovation management and sustainable development from University of Nottingham. I did my bachelor's from Government College University. और मेरा एक twin भी है. That's a fun fact. If you ever see him around, you'll be like, ये दो बंदे एक जैसे. So he works with the Planning Commission Pakistan. So trying to give as much back to the country as we can. But I do agree that we have had a lot of privileges in our life to be educated outside Pakistan. फिर उसके बाद पाकिस्तान आकर भी आसान जिंदगी कोई भी नहीं होती. I started working at the age of 16, and then उससे लेकर अब तक I don't remember a day I took a break. I remember visiting Huma in Washington DC, and she was like, "What are you doing?" I was working at 3 in the night. फिर सुबह 7 बजे उठे तो फिर काम करो तो कह रही तुम सो क्यों नहीं रहे? I was like, because I have to work hard to retain a certain lifestyle or to move ahead in the game. See, we all are not competing with just ourselves, with the world as well, but then my previous day version as well, right? So to improve on, I need to be a little more curious on what's happening around. Acha, let's see. Okay, maybe if I add this skill set to my current portfolio, maybe I'll be at a better position in the future to kind of gain better. Okay, I'm getting some emails. Okay, nonetheless, moving on. So I always say कि मेरे ideas भी आते रहते हैं, but ideas तो बहुत आते हैं.
But if this GIF of mine is now showing me problems, but it was actually ideas going up, motivation going down. So I was like कि कभी कभी इंसान की motivation कम हो जाती है. It's not easy. You're not always motivated to change the world or create a difference. But one step at a time is okay. अभी कल परसों on Instagram I was looking at कि post COVID is not about कि वो एक चल रही थी memes सी Facebook पे and on Twitter that if you do not learn a new skill, if you do not learn something extraordinary out of this COVID, you will not remain relevant or you did not do justice to yourself. I kind of slightly disagree with it. I feel like just surviving the COVID scenario and just surviving this complex, uncertain time is also an achievement on its own. But yes, I also do agree that a little spark and curiosity can make a little difference in your future when it comes to what holds for us post COVID. ये ईडियम इंग्लिश की किताबों में होता भी था, अभी शायद है या नहीं, कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. अगर हम सामने आमने बैठे होते तो मैं आपसे पूछता कि इसका क्या मतलब आपको समझ आता है. बट यूजुअली मेरी जितनी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी तो उसमें तो यही समझाया था कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट का ये मतलब है कि जो जरूरत से ज्यादा दूसरों की जिंदगियों में जिनको इंटरेस्ट होता है ना, स्टार प्लस टाइप, वो फिर खुद ही मरते हैं, राइट. बट मैं ये क्यूरियोसिटी ये वाली आपको नहीं कह रहा कि एहसान क्या कर रहा है या हुमा क्या कर रही है या मिनहाल क्या कर रही है या कर रहा है. सॉरी इफ आई एम mistaken with gender. It's about what can I do different, picking up the emerging trends and cues around me rather than just picking on to what another person is doing. You can take an inspiration from someone, but you're not going to fetch it away from them, right? So there is a very, और इसकी भी वो क्या कहते हैं, डिसेंट क्यूरियोसिटी. ये नहीं है कि किसी की लाइफ के अंदर घुस के वो उसने क्या किया और क्या नहीं किया. This is, I was a little conscious of putting this slide here, but मुझे था कि theoretical ना लगे आपको, but मैं इसको break करना चाहता हूँ इन तीन चीजों को कि curiosity असल में क्या होती है. It's good for just इस प्लीज इस presentation को इसलिए ना सुने कि ये this is going to add value to your current internship program or your work ethics only. This is about your lifestyle. So this is also about how you turn out to be a person after listening to whatever I say, if it matters. Before getting here, मैं सुबह एक किताब पढ़ा था, अगर आपको पता है, मिशेल ओबामा का, जो प्रेसिडेंट ओबामा की वाइफ थी यूएस की. She wrote a book called Becoming, right? I have it with me in front of me right now. और इसकी बुक का स्टार्ट बड़े ही एक अच्छी लाइन से होता है, तो मैंने कहा let's read that out and then put it over to what I've written here. She says, I spent much of my childhood listening to the sound of striving. So the word striving, huh? Came in form of bad music, amateur music, piano sounds, and learning their scales from my neighborhood in Chicago. There are other lines in it, I'm just skimming through it. Applying this thing, the sound of curiosity or the sound of striving, for me, I see it as a sound of curiosity. कि देखो जो बंदा बजा रहा है piano, she's saying कि immature music है, sound अच्छा नहीं है, वो persistent है, वो strive किए जा रहा है. बट वो इंटेलिजेंट भी है कि वो खुद से कुछ नोट्स ढूंढ रहा है और ट्राई कर रहा है. सिमिलरली नॉवेल्टी का मतलब होता है एक क्रिएटिविटी भी है, एक हंगर है उसके अंदर कि वो कुछ नया म्यूजिक क्रिएट करे, राइट. हेंस इमेच्योर म्यूजिक. अदरवाइज तो किसी और का पियानो का स्ट्रक्चर प्ले करे तो वो क्या कहते हैं, is good to go anyways. But then what is the novelty या वैल्यू ऐड उस बंदे ने क्या की, right? So for me, when I was reading this in the morning, I was like, this is going to go very well with what we're going to discuss today. But ये तो वो है जो piano बजा रहा है. What about Michelle herself? In her childhood, it means she as a young person was curious, was intelligent, was persistent to know further कि क्या, what are they doing? और फिर
I don't know if she was novel enough to go and tell them कि इसको कैसे करें या क्या या खुद उसने इससे क्या सीखा, but if we drive that thing and apply it right now, so many times हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा होता है, we don't heed importance to them. And I feel like that is where we are too zoomed in into our lives. We are too focused in our world. I feel like that is the time when you need to be a little more intelligent and pick on the cues, pick on the emerging trends around you, do a little hard work, be a little persistent in knowing further, and then bring your creativity out and rethink how we can do it differently. Not even differently. Differently का ये मतलब नहीं है कि अगर आपने नया एक उल्टा वेंटिलेटर बना दें. No, it's about in a new geographic setting, and somehow this might be an assumption, but where you are from, which part of the country you are from, there are many things which are novel for that society right now or for that culture right now, because unfortunately in our country the socio-economic distribution has not been equal, right? And you or us have been a victim of this, and somehow aap mein kuch communities zyada victim hongi, right? But do not let the victim get to you. Go out. Something which is happening in another part of the country might be novel for your part of the region or country, right? So you can always do a geographic innovation as well. So mere lihaz se curiosity is a combination of these three traits. और आपको को पता हो तो पर्सनैलिटी के ट्रेट क्लस्टर्स भी होते हैं. तो ये मुझे लगता है जो क्यूरियस लोग होते हैं ना, जो थोड़े से क्या लोग पागल से वो क्यूरियस होते हैं, मगर वो ही फिर काफी कुछ डिफरेंट भी कर जाते हैं. हम एक एक्सरसाइज करते हैं. अब नाउ इज द टाइम फॉर यू गाइस टू हेल्प मी इन द ग्रुप चैट. ये लियोनार्डो डिवेंची की नोटबुक है, उसके टू डू लिस्ट के कुछ स्निपेट्स हैं. I'm borrowing this exercise, so it's online. So, uh, but you guys just read this through and find trends. I don't want you to tell me what he's doing. Just give me a trend of के आपको क्या लग रहा है वो कैसा बंदा है. What is he trying to do during his day? So do put it out there. You have 1 minute or a 2 minute. Can someone say yes or thumbs up or anything so I know that you got these instructions? Okay. जबान छोड़ दें, मुश्किल मुश्किल लफ्ज छोड़ दें. डोंट गेट इनटू इंग्लिश और इटालियन जो भी लैंग्वेज है. जस्ट सी द ट्रेंड. उसने किस तरह अपना टू डू लिस्ट को डिवाइड किया हुआ है. हाउ डू यू गाइस आर थिंकिंग ये बंदा कैसा है, ये क्या करना चाह रहा है. Okay, I'll pitch in a little bit. To me, I think मुझे ये बंदा जो लग रहा है, he really wants to learn a lot. मतलब इनका मुझे लग रहा है कि his attention to detail, and that the fact that he different dimensions में उन्होंने हाथ डाला हुआ है, and he wanted to learn just about everything. Shows how curious he was. Shows how interested he was in learning different, let's say, themes, fields. So, okay. Itazaz is saying he's curious about everything. He wants to learn different things. Okay. Is he doing research on Milan? Okay. Anything else, guys? Anything. It's not a test. It's nothing. हमें क्या वो तुम्हारे भी क्या. But हम तो वैसे we are just trying to see how he used to spend his days. Okay. We'll just do another 10 seconds and then I'll tell what I think. Okay, building upon what Huma said, absolutely, he's okay. Hadika says an investigation. Yes, he's into investigating. He is, if you can see, there is rapid spread of what he wants to do in a day, right? He wants to draw, he wants to calculate, he wants to find a book, he wants to discover. ये तो है. But एक और trend भी है. If you see, he's not trying to learn everything on his own. उसने काफी जगह दूसरे लोगों को रेफर किया हुआ है कंसल्टिंग के लिए. कि मास्टर ऑफ हाइड्रोलिक्स को ढूंढता हूँ, मास्टर ऑफ एरिथमेटिक्स को ढूंढता हूँ,
उसने फलाने ने मुझे हेल्प के लिए कहा था, उससे कहता हूँ ask another person. So you don't have to do all of everything yourself. At times you have to build upon the knowledge and networks of others as well. You know, he's building on his discoveries, but as of other discoveries as well, Malale, right? So it's about अच्छा उसको like let's say I'm not someone who's an IT expert, but you all are. But then for me to learn something around IT, for me to redo the whole IT thing, I might go to you. But then at times maybe I don't not want a human interaction to be a little more curious and learn more. Maybe I go and find a book. Okay? So it's also about how rapidly spread your width of the workload is, like in terms of arts भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, उससे आपके दिमाग कहते हैं nervous system is in a little chaotic way right now, ऐसे ऐसे ऐसे, but at least you will somehow find peace in that through cross learning. From the field of art you can apply something in the field of IT, from the field of, इसलिए कहते हैं जो interdisciplinary या holistic studies जिन्होंने की होती हैं, they're more likely to be better at coming up with a decision or making things work, because वो सिर्फ subject matter expertise पे नहीं रहते, right? They're building upon other disciplines of life and other disciplines of subjects as well. So this is one way, and yes, exactly, building on his learnings from others. So you go and find those people. So let's not spend too much time on this. Let's do another exercise. Again, I want answers in this, even if you come up with one first, okay? Name three firsts that happened in Pakistan. For instance, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं देता, मैं कहीं और की दे देता हूँ. Let's say जर्मनी के अंदर फुल मेटल पहने वाले बंदे को जहाज में बैठने की परमिशन दे दी गई है. That's the first for Germany. Like उसका एंटीना है सर के ऊपर, वो कहता है उसके बॉडी का पार्ट है. So that's a first for Germany. He can go through the airports and go through all the securities with that antenna, और वो उसे allow करेंगे because वो उसकी passport के picture का part है. पागल है जो भी है, he is the first in the world to get it through. So do you guys see around you any first that have happened in Pakistan in the last year? Let's start writing. I'll also write mine. You guys also write. एक भी मिल जाए या तीन नहीं लिख सकते, एक लिख सकते हैं. Write something. Let's do this. You have 2 minutes. Put the timer on. Or maybe let's make it a little easier. Last 3-4 साल भी कर लो, if that makes you. I like what Hadika said. Work from home is a first for Pakistan in a way when it is spreading this way. Excellent. I'm writing one. We have a first solar park in the country. Excellent. Humna says we are the first ones to introduce typhoid vaccine into routine immunization program. Go guys, go. You're IT people. तुम लोग तो इतनी चीजें create करते हो. Anything. और एक और चीज है. I think right now our brain would be trying to see कि जो सबको पता हो. It's not important. Something in your neighborhood, a local solution, something your mother did or your father did or your brother did, anyone. कोई भी नहीं लिख रहा कुछ भी. You can unmute yourself also if you wish to speak other than writing. Okay, Roxana is saying in KP there's first female program host and she's visually impaired.
And then there's Muhammad Hilal, who says centralized digital presence for all citizens of Pakistan. Excellent. Data's there. We have a first loan scheme program for young people through Kamyab Jawan program. Minute to go. But while you're thinking, what do you think would be the purpose of doing an exercise list? Anis says British Airways start operations in Pakistan. Okay, good. Huma says Prime Minister SARS program being the first and the largest relief program. Excellent. What else? Purpose क्या था ये देखने का? It was about at times we are so, again I'll say this, zoomed in into our own domains and work that we forget that around us people are thinking differently. People are being the first to introduce that in a geographic setting or in a country or even around you, right? अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम कुछ के लिए बिल्कुल नया है, कुछ ने पहले कहीं ना कहीं और किया होगा, राइट? दैट माइट बी अ थर्ड फॉर मी, बट इट माइट बी अ फर्स्ट फॉर यू, राइट? So it's about being a little more curious around finding what are the firsts around us. ठीक है? I hope it answers why we did this exercise. This slide, uh, if you guys can see, पहले यहाँ पे मेरे because I've borrowed the slide from my own work, so यहाँ मैंने पहले लिखा हुआ था we need to reimagine development in the 21st century. But post COVID is going to realign or we have to reimagine or rethink how our lives. Now I've left a blank here. This could be anything related to what is more close to you. Is it development sector? Is it technology sector? Is it economy? Is it your own life? Whatever it is, you fill in the blank yourself. And how post COVID you think that the current practices we had and the risk post COVID has gone so high, we are now struggling with the relevance gap. We now have an opportunity window. You might see this as a negative thing, कि relevance का gap है. I, on the other hand, is looking this as an opportunity window. So if you're curious enough to find what the future holds for you, or alternate futures, जरूरी नहीं है एक ही जो आपने सोचा है वही future होगा. Multiple future scenarios, you will be able to reduce this gap by creating something of your own in your own life, in your own sector, or any corresponding sector. So that's how I think it. Now the big question is, your job kiski hai to identify these spots? Your first, who is this person, or who should that be? Who should identify these first? You can write in the chat box. Is it the government? Is it your mother? Is it your father? Is it your supervisor? Is it the manager who's managing your internship program? Whose job is to spot these first around you? Yeah, trends around you. Very simple answer. I know you know this. Exactly, it's you, it's us. But us is collective brainstorming, right? First, it starts with each one of us, right? It starts with each one of you out there. The premise of being curious or premise of being experimental starts with your own thinking. ऐसा नहीं है कि हुमा ने सोचा हुमा की curiosity के ऊपर मैं build करूंगा. Yes, I can build upon it, but I need to also be someone who needs to open up my vision. Now, if you guys can see me in the camera or whatever,
is like tunnel vision. हमारी जिंदगी में हम बहुत tunnel vision create कर लेते हैं कि अभी मैं internship कर रहा हूँ, मैं IT में internship कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे इसी job मिल जाए, इसी ऑफिस में मिल जाए, या मेरा 10,000 बढ़ जाए, या मुझे इसके बाद हार्वर्ड में एडमिशन मिल जाए, ये वो. So we're focusing just on the immediate goals in our life. But at times you need to pause, you need to reflect, you need to open up this window which you have created around you to zoom out. Zoom out and look into the world around you and find emerging trends. Maybe the IT skills you have are most needed in the health sector right now. So maybe you do a marriage of these two and come up with something which is new and novel for both the digital sector as well as the health sector. So that's how curiosity plays a role. But curiosity में तो आप क्या कर रहे हो? You're just finding future trends. Let's use one tool right now. We don't have the time to go through the whole tool, but this is something I think you should learn. कि कभी कभी जरूरी नहीं आप हर चीज दिमाग में कर रहे हो. You can also help yourself with some tools around you which can help you think differently. One such tool is Future Wheel. ये क्या करता है? It helps you explore possible futures. Let's say trend या event आपने center में डाला, something which is disruptive in nature. फिर उसकी direct implications क्या है कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है directly, but then what are the indirect implications? You can put COVID in between, you can put anything in between, but then you will have to brainstorm for possible future scenarios around it. Let's say we put severe traffic congestion. Peshawar में भी बहुत है, Lahore में भी बहुत है, Karachi में भी बहुत है, Quetta में भी बहुत है. So it's a severe issue right now, okay, traffic congestion. Yes, COVID has helped reduce it, but it is going to we help identify direct implications के loss of quality of life है, productivity lose हो रही है, people have more me time, so it's a positive sign. More demand for alternate transportation, okay, positive sign. And the worst outcome, air pollution. So if you see, direct implications doesn't always mean negative. हर चीज की बुरी implication नहीं होती. There could be some positive implications as well. You further break them down and find out, you're not going to go in detail, but you find out, for instance, loss of quality of life की वजह से stress हुआ, mental health issues बढ़ गए, उसकी वजह से आपको heart attack हो रहा है, आपको BP बढ़ रहा है, आपके increase होगी health care cost. ठीक है? Similarly, air pollution की वजह से भी लोग बीमार हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी health care cost बढ़ गई. मगर इसकी पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम मोर डिमांड ऑफ ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन को फीड इन करें, सो हम बेटर हेल्थ की तरफ जा सकते हैं. सो अगर आपने ये एक्सरसाइज की, लेट्स से कोविड एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एंड सम पॉजिटिव implications were coming out, you can now see the trends and pick and choose, okay, where can I put my bet for a possible future where I can start experimenting या prototyping, ताकि मैं उसके बाद प्रूव कर सकूं कि ये स्किल के बाद या ये प्रोटोटाइप क्रिएट करने के बाद आई वाज एबल टू क्रिएट अ पॉसिबल फ्यूचर. और जब आप अगर ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन को बेटर हेल्थ से लिंक करके कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो नया ट्रेंड बीच में आ जाएगा कि ऑल्टरनेट, तो उसके अपने पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, उसकी अपनी नेगेटिव इम्प्लीकेशन निकलती रहेंगी. But this somehow helps you get to a possible future. It's a tool, right? It's not fully constructed. Yeah, ये कोई वो fully आपको आंसर नहीं कर रहा. But the point here is that it helps you get to possible futures in an exploratory manner. But then, is it just about exploring the futures या processes? ये तो कोई भी अभी बैठ के कर ले और फिर कह दे कि हमने एक प्रेफर्ड फ्यूचर का प्लान बना लिया कि ऑल्टरनेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा. बट मुझे लगता है मोर इम्पॉर्टेंट इज टू बी सेंसिटिव टू बोथ दी सिग्नल्स ऑफ चेंज अराउंड यू. कभी कभी वीक सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि डिजिटल एजुकेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, राइट? पहले वो वीक सिग्नल थे, अब वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपके इर्द होना शुरू हो गया. बट पोस्ट कोविड इट माइट डाई. ठीक है, बिकॉज हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि फिजिकल एंड डिजिटल एजुकेशन टुगेदर इज समथिंग व्हिच marries well as often just one way of doing it, right? So वो multiple futures में सिनेरियो चला जाता है कि अच्छा
digital plus physical, only digital. How do you fit in everything? You don't fit in everything. It's okay. हर कोई हर चीज में नहीं हो सकता. अपनी फील्ड से, अपने इंटरडिसिप्लिनरी सेक्टर्स से find those signals of change and then explore them further. Okay, ये तो एक way हो गया. See, I'm giving you nuggets of information. You can further build upon it. There's a lot of information out there, or tools out there which you can then, being curious, explore further. Curiosity में एक और चीज भी होती है कि nobody feeds it to you. You have to be curious enough to learn more about that. So moving on to the other part of the presentation right now is about how to build an experiment. Like, let's say कि मैं कुछ prototype करना चाहता हूँ, but पहले समझने की जरूरत है कि experiment क्या होता है, क्या नहीं होता. This is also a little theoretical, but this is something about experiment is about capturing in a structured process कि पहले आपको पता हो कि आपने इर्द गिर्द उसके जो आप सब ने अगर साइंसेस पढ़ी हैं तो आप फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, कुछ को वेरिएबल रखना पड़ता है ताकि आप देख सके कि ये डज इट इवन वर्क और डजंट वर्क, राइट? फॉर इंस्टेंस, लर्निंग इज अ प्रायोरिटी. सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपेरिमेंट करने की वजह यह है कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न आउट ऑफ इट. बट देन टेस्टिंग विद एन हाइपोथेसिस, वी विल गेट बैक टू दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट फिर एक स्ट्रक्चर हो और टाइमलाइंस. लेट्स से आपको कुछ भी समझ नहीं आया, छोड़ो. कल मैं आई वाज टॉकिंग टू अ बॉय हु वाज क्रिएटिंग दिस प्रोटोटाइप इन पाकिस्तान कि कोविड में भी डिटेक्शन में बहुत इशू हो रहा है, राइट? सबको टेस्ट कराना है, बट फिर वो ये भी कहते हैं कि सब टेस्ट ना कराएं जब तक आपको सिवियर सिम्टम्स ना हो. माइल्ड सिम्टम्स हैं या बहुत whatever the word is, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है so don't go for it. But then किसी को कफ है, उसे समझ नहीं आ रही कि ये कोविड कफ है या उसको निमोनिया है या कौन सी कफ है. He doesn't cannot characterize. So this boy is creating a machine learning AI based system in which you just अपने मोबाइल पे you open the app, you cough for like particular seconds है, and based on उसने database जो बनाया हुआ है positive COVID वालों की कफ का, machine learning के through it tells you कि how susceptible you are to or being or vulnerable to being a COVID positive, and then you should go for a test or not. It is not 100% reliable system, but at least it is something which he's thinking differently. It might fail miserably, but that's the beauty of the process, right? Usko कहते हैं, it will help him learn. It will help him test a hypothesis. If cough can be detected before, then COVID testing can be more rapid. Okay, ये उसने hypothesis बना लिया. फिर उसने एक structure बनाया learning का कि इतनों पे उसने टेस्ट किया, वो उसका प्रोटोटाइप कर रहा है और उसके बाद उसने 82.5% उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी रेट की सक्सेस आई है, ठीक है, और उसने अपने आप को 3 माह दिए हुए इसके अंदर उसने करना. It might not be some solution which goes widespread during the time of COVID, but for future these pandemics or future respiratory diseases, maybe this is a solution worth testing or scaling up, right? एक और चीज है, अब मैंने 2 वर्ड्स को मिक्स किया, आइडियाज और सोल्यूशन को. आइडियाज पे मैंने बोला टेस्टिंग, सोल्यूशन पे मैंने बोला स्केलिंग. It's because you never equate an idea to solution in one go. Idea is something which needs to be tested. Solution is something which is already tested and is good to go, right? So you now onwards will treat your ideas as hypotheses. So that helps with the spirit of experimenting in your own life as well. For instance, I'm keto diet and मुझे कभी होता है कि मैं क्रीम के अंदर ये वाला क्रीम चीज डालूं तो ये साथ डालूं तो इट विल मेक बेटर टेस्ट, राइट? इट्स एन आइडिया. तो मैंने उसको टेस्ट करना, ठीक है, उसके बाद अगर वो अच्छा बन जाता है तो वो दैट विल बिकम अ रेसिपी व्हिच आई कैन क्रॉस शेयर. सो
that becomes a solution that I'm going to tell people that it helps with improving the taste, right? Very little things in your life are also experiments around you. So why can't your work be treated this way? Why can't you go to your manager or supervisor and tell them that I'm thinking of this? Would you allow me or give me a little liberty to think differently here and test these two possible futures? कि अच्छा अगर हम ऐसे करते तो ऐसे होता, ऐसे करते तो ऐसे होता. I know it's difficult in Pakistan's context. It's difficult हमारी organization में इतना room नहीं होता. But कभी कभी शायद हम blame game में भी चले जाते हैं. We're always putting the blame on the management कि उनकी practices ऐसे हैं. You're also part of the same wheel. You also kind of become that same person. So try to be a little different. Take a pause, reflect on your ideas, turn them in some testable hypothesis, and then learn from them. और तुम लोग देखना कि how it's going to make a difference in how you do it. This is another tool कि आप काफी सारे ideas, अगर आपने design thinking देखी हो या पढ़ी हो तो आप काफी सारे post-its के ऊपर अपने ideas डालें, फिर उनको 3 steps में divide करें कि what will certainly work, what will probably work, and I'm pretty sure कि don't know कि ये चलेगा या नहीं चलेगा. So you cluster your ideas in 3 categories. And a happy bet or a good bet would be to pick from the central column. Okay, will probably work. So then you're not on an extreme end of ke chalega hi chalega, or an extreme end ke to chalega hi nahi. Right? So you have what we say, a good balanced experiment being ready that you probably think it would work, right? But यहाँ मैंने एक चीज नहीं डाली कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका एक्सपेरिमेंट चलेगा या आपको ऑलरेडी पता है कि ये सोल्यूशन तो चलेगा ही चलेगा, then that cannot be an experiment. The underlying principle of calling something an experiment is that you have a learning component to it and there is a testing proportion to it, right? It is not something which should only be ये तो मुझे पहले ही पता था चलना है, तो फिर वो आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो आपने एक सोल्यूशन को बस फर्दर एक्सेलरेट किया है या उसे स्केल अप किया है या उसको इम्प्लीमेंट किया है, राइट? सो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. इफ देन मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि इफ इज कि ये एक्शन करेंगे तो देन क्या चेंज आएगा. लाइक इफ पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टार्ट्स पेइंग बेसिक इनकम to all its citizens, then there will be no inequality in the country. Okay, that's a hypothesis test. Maybe on a small group, the government starts needs to doing that, and they learn from it that did it help or not. Okay, I've taken a little more time than what was given to me, but then now we have good more than 30-40 minutes to do a discussion. So I'll ask for the help of the moderators to then help unmute or mute or whatever, that how can we bring this, whatever we've discussed right now, curiosity, testing ki spirit, experimentation ki spirit, into your current work as interns or someone who's a graduate who wants to further go into mainstream work, right? How can you bring this little essence of what we discuss into your current working? And I'm happy to take questions while the discussion is happening. Thank you. I think you guys can unmute yourself and let's start a very raw discussion. We don't have to have super answers right now. Who's the volunteer? Thank you so much, Ehsan. This was amazing, but हम लोग we'll wait. The moderators, me and Halal, would actually wait and expect for the interns to come up with questions, or not just questions, comments भी. कुछ कहना है, कुछ बोलना है, अपने work place में आपको ये चीज place करते हुए समझ नहीं आ रही, please feel free to ask Ehsan. Okay, thank you everyone for joining. और अभी जितने भी questions हैं या जितनी भी
कमेंट्स है या जिसने कोई एडवाइस देनी है तो हम इज हियर, एहसान साहब इज हियर, मैंने एहसान साहब इज हियर, दिस इज हिज फील्ड, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अगर किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है एंड बाय एनी क्वेश्चन, आई मीन एनी क्वेश्चन के माइंड में जो कुछ भी आ रहा है, दैट्स योर क्यूरियोसिटी। अपनी किसी भी क्वेश्चन को एज अ सिली क्वेश्चन ना लेके मैं पूछूंगा तो ये क्या कि मतलब इनको ये समझ नहीं आई, तो इस तरह की कोई भी चीज ना करें। दिस इज योर क्यूरियोसिटी एंड आप ओपनली पूछ सकते हैं इन चैट, और किसी ने अपना माइक ऑन करना है, दे कैन टर्न ऑन देयर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन। Okay. I can speak for another hour. Don't worry. We'll not end it just right now. ओके, वैसे खैर उनको भी अभी थोड़ा सा अपनी क्यूरियोसिटी को निकाल के उनके से थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं वगैरह नहीं, वो कर बगैर लिया आप करें। अगर आप उन वर्ड्स में ना भी जाएं, जस्ट बिकॉज आप सब इंटर्न्स हैं तो यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, और आप लोग एक ग्रेजुएट प्रोग्राम से आए हैं, तो आपको काफी चीजें कभी कभी दुख भी देती होंगी, कभी कभी बहुत एक्साइट भी करती होंगी। लेट्स टॉक अबाउट देम एंड I देन think, वील and I टेक इट। think, and I think I would also request all these interns कि अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पे इस इंटर्नशिप में क्या चीज है जो कि आपको लगता है कि शायद वो मिसिंग है, आप यहाँ पे लाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, नई कोई एक इनोवेशन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये चीज ऐसे हो जाए तो मे बी ज्यादा मजा आएगा काम करने में, प्लीज लाइक कम फॉरवर्ड, से एनीथिंग। Okay. Minhal has a very interesting question. How to overcome the fear that we have in mind while doing something new? Hmm. That would always be there. I think you have to build upon your fear and tell yourself, okay, what, little steps at a time. Don't do the whole thing in one go. Maybe start testing a little. अगर आपको fear usually किससे होता है? आपके सुपरवाइजर से आपको हो रहा है, आपसे, यू कैन लेट मी नो, इज दिस योर ओन इंडिविजुअल फियर, इज इट व्हाट वुड अदर थिंक, इज इट समथिंग दैट व्हाट वुड योर पीयर्स थिंक, जो मुझे लग रहा है अभी भी हो रहा है इस कॉल में कि मैं कुछ स्टूपिड ना बोल दूं तो व्हाट वुड माय अदर पीयर्स थिंक। नोबडी केयर्स, इट्स अबाउट योर ओन स्पेस, योर ओन टाइम। हाँ Minhal, if you can tell me that is it what kind of fear this is? वैसे सांस से पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इट्स मोस्टली द फेयर ऑफ फेलियर के, मतलब मैं फेल ना हो जाऊँ, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर लूँ तो अगर मैं फेल हो जाऊँ तो मतलब या तो टाइम वेस्ट होगा या लोग क्या कहें। सबसे बड़ा फेयर तो यही होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस तरह करूँ, स्पेशली हमारे इस रीजन के लोगों में ये फेयर बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थिंक ये ओके उनका आंसर आ गया, बिकॉज ऑफ एनीवन एल्स। ओके वही। No, they're talking about individual fear, right? या Individual fear is actually a strength. I at times think अगर आप में थोड़ा सा, if you are having fear of failure, it actually helps you strive a little to make it work, to make it better, right? हमेशा कहते हैं you should not strive to fail, you should strive to make it work, you know. Failure can be an outcome, failure can be some byproduct of it, but then Michelle Obama was also saying that she grew up listening to the sounds of striving. So why don't you turn the word fear into striving? Don't say कि मैं try कर रही हूँ, just say I'm striving, right? I'm striving to I'm striving to make a difference. I'm striving to learn a new skill. I'm striving to create a product or anything. And then see, fear of failure is is also about how much you equate that product or anything, कि आपकी livelihood चली जाएगी या आपके क्या कहते हैं, आपके miserably आप ये जितने भी आपका पैसा था वो उसमें लग जाएगा, right? So it's also about लोग क्या करते हैं थोड़ा सा, I think it's deviating, but then I'll just make this point here that
when I create an experiment, I do not put too many risks to it. Like I try to minimize the risk in what I do by reducing the amount of resources I'm applying to it, right? By reducing the uh, sorry, unmute yourself once I'm just done by just saying this, that you can reduce the number of risk associated to it, right? वो किस तरह होता है? जैसे मैं $1,000 के अंदर अंदर बनाना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट, अगर मैं $5,000 का बना के ऑफिस वालों को कहूंगा तो वो क्या कहते हैं bigger risk for me and there is more fear of failure to it, right? So prototyping has to be dirty, quick and ये तीन चीजें हैं. जहां पे आपको लग रहा है कि प्रोटोटाइप जरूरत से ज्यादा पैसे ले रहा है या जरूरत से ज्यादा आपकी एनर्जी ले रहा है या जरूरत से ज्यादा it's getting too sophisticated, then you're not doing the experiment in the right way. Okay, that's how I think it. But start doing with one. It will help reduce your fear, right? There's always the first, remember, as I said. Who was that? Ruxar, if I'm saying the name right. Can unmute, yeah? अस्सलाम वालेकुम Alaikum salam. सर मैंने यहाँ पर कुछ ऐड करना था जो आपने टेस्टिंग के हवाले से तो आपकी वॉइस मुझे थोड़ा फेड हो रही है. If you can speak in the mic, please. ओके सर अभी आ रही है सही आवाज? जी जी बिल्कुल. मैं कहना चाह रही थी कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी तो उस वक्त जो है हमें कहते थे कि आप जो गैप होता है डिपार्टमेंट में और प्रैक्टिकल फील्ड में, तो इसके हवाले से कि क्यूरियोसिटी और टेस्टिंग ये कि अगर कोई डिपार्टमेंट जैसे कि हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, अब मैंने जैसे इस इंटर्नशिप में इस तरह हिस्सा लिया कि फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो ऐड आया, मैंने देखा, फिर पोस्ट देखी तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया. तो इस तरह का डिपार्टमेंट्स जो है अपने स्टूडेंट्स को रेफर करें. जैसे मेरे जर्नलिज्म मेरी फील्ड है, तो हमारी 3 फील्ड्स हैं, रेडियो, न्यूज़पेपर और टीवी और इसके अलावा पीआरशिप. तो अगर हमारा डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स को जो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको रेडियो में, टीवी में, पीआरशिप में जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, अगर वो उनको वहाँ पर रेफर करें, अब उनको जो है कवर लेटर या कुछ भी ऐसे लेटर वगैरह लिख के दें कि आप फलां जगह पे जाएं, आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकती हैं, यहाँ पे फिर आपको फिर आगे जॉब के मौके मिलेंगे. तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हमारी यूनिवर्सिटीज को और डिपार्टमेंट्स को करना चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि अक्सर जो है जो ग्रेजुएट हो जाते हैं फीमेल्स होती हैं तो वो टीचिंग की तरफ चली जाती हैं, हालांकि उन्होंने जो है वो जर्नलिज्म में मास्टर्स किया होता है या जो है किसी भी साइंस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया होता है. तो एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने नोट की अपने यूनिवर्सिटी टाइम में, तो मैंने तकरीबन 8-9 महीने जो है फारिग बैठ के घर में गुजारे थे. वैसे फारिग नहीं थी, मैं रेडियो वगैरह जाती रहती थी, लेकिन ऐसा सच में मुझे ये नहीं था कि अब मैं कौन सी फील्ड की तरफ जाऊं, क्या करूं. वही बात कि फेयर ऑफ फेलियर या जो है फेयर ऑफ रिजेक्शन, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि मैं इस जगह पे जाऊं, अप्लाई किया, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम लोग क्या पता जाएं हमें रिजेक्शन मिल जाए कि हम नहीं यहाँ पर आपको नहीं हायर करते ये और वो. My brother is a PhD from Oxford University. तो आपको सुन के लगेगा कि सुबह जॉब मिल जानी चाहिए और इतना एक्सपोजर ये. He gets almost 20 to 30 rejections in a month, you know. But he's not letting that fear get to him. Of course आप nervous होते हैं. Of course आपको थोड़ी सी anxiety होती है. But as I'm saying, try to pick upon that energy in a positive way and keep doing what you wish to do. But maybe with little different iterations. कि शायद आपका resume एक ही way में हर जगह जा रहा है. Maybe you need to rethink a little there. But to bringing back to Rukhsar's point of placement officers or placement help, that's an experiment on its own. Maybe with Helvetas or with other agencies you guys are working with who work on employability and all, create a digital space or create a space for the universities to उनके templates, उनको क्या मसला उन्हें लिखने में मौत आती है या उनको उनके लिए काम बढ़ जाएगा. So help them with creating a repository from where they just download, put the name of the child and of the student and just send it in a digital way to these relative industry partners, and
Maybe if that helps, maybe that doesn't help, but that's what comes out of your own curiosity that you were able to see around, huh? So good addition. What we have here now from Josefa is, as we don't know when will this, which I refer to COVID, we can't stay home more, though it's important right now. We might go for new normals. Excellent, yes. Down the road in 2 3 months, but how this will come to experiment and then practical implementation. Can we suggest this to government department? Okay. So are you saying that how would working from home should become a new normal? Is that what you're saying? Zephyr, you can unmute yourself. हम नहीं खाएंगे आपको. Can someone help me understand if this is what he means? Working from home. Okay, no, something else. Okay. What is it, Zephyr? Just unmute yourself and tell me. Okay, can you hear me? Absolutely. देखो कितनी अच्छी आवाज है. बोलो. अच्छा, so मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि this wouldn't last, बल्कि situation तो है, it's a pandemic, we don't know कि कितने टाइम तक जाएगा, but the thing is that कि we can't stay home this long. चले 1 महीना 2 महीना आगे फास्ट फॉरवर्ड 2-3 महीने और चले जाएंगे, but life resume भी तो होगी ना. So the question is कि we can work or we can go to work randomly, like इस तरह हो सकता है कि मंडे चले जाए, ट्यूसडे ऑफ करके वेंसडे फिर बंदा इस तरह करके, तो एक ये भी हो सकता है न्यू नॉर्मल्स जिसे हम कह रहे हैं. दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ जाया जा सकता है, बिकॉज सम टाइम यू नीड टू गो टू ऑफिस. कुछ एनवायरनमेंट आपको चाहिए होती, कुछ मेंटली भी आपको एक जगह ऐसी चाहिए होती जहाँ पे आप सोच सके कि यार मैं मेंटल उस लेवल पे जाना चाहता हूँ कि काम से सही हो सके, या वर्किंग प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा, बिकॉज वर्किंग फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी एक टाइम तक जाती है ऊपर, देन द ग्राफ विल स्लोली एंड ग्रेजुअली गोज डाउन. तो दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज कि अगर हम न्यू नॉर्मल्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दें with all precautionary measures, not that mean कि न्यू नॉर्मल्स मीन कि कोई भी बस कुछ भी कर दे, जिस तरह हमारे लोग अभी पाकिस्तानी कर तो रहे हैं, वही नॉर्मल लाइफ ही चल रही है. बट इफ वी गो टू न्यू नॉर्मल्स, सो हाउ दैट विल कम इनटू एक्सपेरिमेंट, एंड उसके रिजल्ट्स फिर किस तरह ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और वो किस तरह से सोसाइटी को हेल्प कर सकती है. दैट वाज माय क्वेश्चन actually. Therefore, what you just said was exactly the discussion we had with our regional innovation center yesterday. We were also using the same word, new normals, and I'm so happy and glad that someone in this call was able to think that way, right? With this vision कि future में new normals होंगे और different scenarios होंगे. What you're trying to say here is कि multiple scenarios test करें. एक lockdown है, एक going to office with precautions है, एक UNDP ने propose किया था कि रोटेशनल वर्क के एक ऑफिस के अंदर, मतलब एक रूम के अंदर 2 लोग ज्यादा ना बैठे हों, तो अगर 4 की स्पेसेस हो, सिर्फ 2 of them are sitting, nobody sitting in front of you, nobody sitting at your back. So उस हिसाब से भी रोटेशनल लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, right? This is a suggestion. But right now, government machinery, or they're so overworked right now with supporting the response to COVID through the frontline workers and all, they're a little less focused on this right now because हमारे यहाँ behavior का भी तो issue है ना, हमारे यहाँ awareness का भी issue है. You, me, or the people in this call are highly privileged right now because we're graduates, we're people who've gone through the education system. घर में हमारी अम्मी हैं, अब्बू हैं, ये सब हैं, चलो वो तो घर पे रहे हैं. वर्क प्लेस पे भी आ रहे हैं, हर किसी की सिमिलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवेयरनेस नहीं है अराउंड प्रिकॉशंस एंड ऑल. एंड ट्रस्ट मी, इस कॉल में भी अभी ऐसे लोग होंगे जो घर में नहीं प्रिकॉशन ले रहे होंगे. Not pointing anyone out, but just saying it is
maybe a suicide by the government by allowing all the schools, all the offices to open up with precautions, right? It is so like आप locus of decision making इंडिविजुअल के पास वापस भेज रहे हैं. अभी डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के पास है कि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, आप बैठ जाएंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आपको फाइन कर देंगे, आपकी बेइज्जती होगी, जो भी होगी. अभी लोकस वहां है. जब डिसीजन मेकिंग वापस आपके पास आ जाएगी तो इस तरह तो हमारी कौम को कितनी दफा कितनी चीजों पे अवेयरनेस मिली हुई है और कितने चीजों पे कहते हैं कि ये करो वो करो. ये at the end of the day we do the same old bad stuff. So the challenge here is the locus of decision making. That's your learning here. कि decision making अगर वापस citizen के पास जाती है तो does that citizen adhere back to what was in the front place? This is a very good example of how your experiments need to have learning questions as well. एक तो hypothesis है, एक learning question है. What are we going to learn from it? Like for in case of Ruxar, you need to learn कि शायद placement offices work or they don't work, right? In your case, going to office with precautions. Now the decision is with the citizen again. With the learning question is, जब decision citizen के पास फिर से आते हैं, तो क्या वो फिर उसी चीज को उतने ही reliability से आप उन पर trust कर सकते हो? It's just like fine versus incentive. मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा कि तुम घर से ना बाहर जाओ, और तुम घर से बाहर गए तो मैं तुम्हें 1000 रुपये का फाइन दूंगा. We did this experiment on plastics कि हमने कहा जी कि प्लास्टिक का जो बैन लगा हुआ है, अगर आपके घर के अंदर से क्या कहते हैं प्लास्टिक निकला जो आप कचरा फेंकते हो उसमें, तो गवर्नमेंट आपको 1000 रुपया फाइन करेगी. ठीक है, एक ग्रुप के साथ हमने ये किया. दूसरे ग्रुप के साथ हमने ये किया कि हम आपको 1000 रुपया देंगे कि अगर आपके कचरे में से प्लास्टिक नहीं निकला. Tell me in the chat or unmute yourself and tell me what was the outcome of the experiment. Who, anyone, anything? I think the fine work. Definitely जो rewarding usually work in gamification. Hilal will know. Okay. Much better. Okay. Zafar, rewarding work. I think fine work. I don't know if Hilal thinks something. Well, अगर हम अपनी बात करें तो मैं फाइन बहुत अच्छी चीज होती है और उससे काम बहुत ज्यादा वो हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है. सॉरी, रिवॉर्ड का ये है कि यस दैट्स आल्सो वर्क्स, लेकिन लाइक if you enforce something तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है in a society like ours. Yeah. So actually, this is exactly what we found from that experiment. Our assumption was when we started, the reward would work. कि मुझे कहो मुझे 1000 रुपया दोगे. Unfortunately, लोग बहुत पिटे हुए, उन्हें 1000 रुपया नहीं चाहिए गवर्नमेंट से. वो कहते हैं मुझे अगर फाइन किया तो उसमें नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव बिहेवियर आ जाता है कि मुझे स्टिग्मेटाइज, मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मैंने किया. फाइन, they don't just see it in monetary terms, they also see it in terms of how this is going to be derogatory to them or towards their neighborhood or how people would perceive them. या उनके घर एक रेड नोटिस आया, you know. So fine worked in that case, but that's a learning which we did ताकि हम आगे की प्रोग्रामिंग में ये कह सकें कि somehow fine works better in the country as opposed to incentivizing through rewards. You see? So that's how we were thinking. Okay, we have someone here. In Peshawar Zoo, our masters practically stoned the animals, and then the government implemented certain fine on the animal abuse, and people stopped doing it. So my answer was okay, good. As I was, I will just add to that. I've seen the way they are taking precautions and doing their work normally, so we can also do that and go to offices normally. But I think first we need a lot of awareness around that. Exactly, and then McDonald's as an organization
has the bandwidth and the funds and the resources to afford that kind of protective measurements, protective equipment. We as UNDP सिर्फ 200 मास्क हैं इनके पास जो अपने स्टाफ को दे सकते हैं, वो भी वो नहीं किसी को दे रहे ये कह के कि we will we have saved it for people who will go through COVID or someone like that. So it's difficult, you know, it's resource heavy. कि सबको protective gears देना, protective measures देना, ये सब. So I'm not negating the fact that work from home ही चले. This is good. This is good stuff that we're thinking collectively. We're capitalizing on a collective intelligence and think of कि क्यों इस experiment में क्या assumptions हम बना रहे हैं, right? ये assumption है हमारी कि हर कोई ये कर पाएगा. Awareness तो एक चीज tool है, but then assumption of resources. How can you equate all the SMEs and all your organizations on the same level of कि शायद उनको अगले महीने की सैलरी देने के पैसे ना हो, वो आपको protective gears या measures कहाँ से लेंगे, right? So think through all the assumptions we have in the background as well.